Candidate Spotlight, where we bring you unfiltered content about your candidates. Today we have Daruwale Rudresh Sanjay contesting for General Secretary Hostel Affairs Board. We will have the interview in two segments. In the first segment, we would be asking questions collected from the campus janta, and the second segment will be kind of a rapid fire. Let's start. When animals are free to move within the hostel arena, they drink water from the water cooler and sleep around, causing disturbances to hygiene. So, how can filtration alone provide safe and clean water? See, I have one more agenda. Installing auto closing doors on staircase of every hostel, ground floor. So that will ensure no animals will go to the next floors. See, जब मतलब जो एनिमल्स होते हैं वो जब मतलब ये प्रॉब्लम्स होते हैं कि जैसे आपने मेंशन किया जो वाटर कूलर्स है उनको कभी कभी लीकेजेस होते हैं उसमें उसमें से पानी लीक होता है तो मतलब एनिमल्स जाके वहाँ पे पानी पीने का ट्राई करते हैं दैट कॉजेज हाइजीन इश्यूज जो मतलब इंस्टॉल करेंगे हम मतलब ऑटो क्लोजिंग डोर्स उनका ऐसा रहेगा कि उसके वजह से बाकी फ्लोर्स पे वी कैन नॉट टेल अबाउट ग्राउंड फ्लोर्स बट बाकी फ्लोर्स पे डॉग्स एंड कैट्स ट्रैवल नहीं कर पाएंगे उसके वजह से तो ये इशू सॉल्व हो जाएगा. So, like the auto closing doors will solve problems for only dogs, but like if the staircases from in the ground floor don't have grills and also like just installing doors won't work for the cats, so they can jump around and move to the other floors. And Uh, the population of cats is more in our campus. So how do you expect to solve yeah, population of cats is more एक्सेप्ट लाइक मतलब दिसांग हॉस्टल में उन्होंने किया है कि जैसे उसके लिए दो ऑप्शन है हमारे पास एक जो नेट्स होती है क्रिकेट ग्राउंड के साइड में एक नेट्स होती है तुम्हें पता है ना तो वैसे नेट्स अप्लाई किए ये दिसांग गर्ल्स में किया गया है तो वैसा हम कर सकते हैं आपके लिए. Considering that Hab had previously built shelters for animals, but the animals did not stay there, resulting in wasted funds, how do you plan to ensure that the shelters you construct will actually be utilized by the animals and serve their intended purpose? देखो एनिमल्स का मेन ये होता है फूड फूड हॉस्टल्स वहाँ पे सर्व किया जाता है उनको तो वो प्रिफर करते हैं वहाँ पे रहना. अब शेल्टर्स उनके लिए मतलब है इतने अवेलेबल नहीं कुछ नए शेल्टर्स अप्रूव किए गए हैं तो और वहाँ पे जैसे फीडिंग एरियाज वगैरह रहेगा वो मैस से सीधा कॉन्ट्रैक्ट रहेगा उसका कि मतलब उनको फीडिंग वहाँ पे प्रॉपर दी जाएगी तो फीडिंग अगर वहाँ पे प्रॉपर रहेगी और मतलब हॉस्टल्स में एरिया मतलब उनकी एंट्री रिस्ट्रिक्टेड रहेगी तो वो वहाँ पे ही रहेंगे. Okay. What is the temperature rise in the top floor rooms during summer? Have you collected any data over the month, at least in your hostel? How does the installation of a sunroof reduce the heat? देखो मैंने जैसे स्पीच में भी मेंशन किया था ये चीज़ कि एक टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल था 1972 के बाद फर्स्ट टाइम 40.1 डिग्री सेल्सियस गुवाहाटी का टेम्परेचर राइज किया है विथ 93% ह्यूमिडिटी. सो और हमारे जो मतलब हॉस्टल के स्लैब्स है हर हॉस्टल पे सोलार्स नहीं है ये कॉन्क्रीट स्लैब है दे एब्जॉर्ब द हीट वेरी क्विकली सो टॉप फ्लोर्स में तो इसमें काफ़ी दिक्कत आती है तो उस पर हमें मतलब एक बेस्ट सोल्यूशन तो अभी यही मिला है कि वाइट रिफ्लेक्टिव पेंट इसका रेट 70 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट चलता है जो कि मतलब जो नॉर्मल हमारा वॉल पेंट है उसका 22 रुपीज़ होता है उस मतलब फॉर कंपैरिजन तो उससे और हमने मतलब इसके प्रोजेक्ट देखे इसका मैं ब्रांड बता दूँ आपको कि एजो नोबेल ब्रांड है इनसे हम बात कर रहे हैं वाइट रिफ्लेक्टिव पेंट के लिए और बाकी ये 3 to 4 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर ड्रॉप कर देता है और इसका लाइव प्रोजेक्ट है रॉकवुड नाम से. But like the question asks sunroofs, how will the sunroofs reduce? I didn't No, mention about paints. no, Okay. I'm telling that's the solution. Okay. You have mentioned equal distribution of freshers in hostels. Currently, most hostels do not have freshers, which would increase the gap between the upcoming first and third yearites. How would you address this issue? See, it will be a redistribution मतलब जो अभी फर्स्ट ईयर है नेक्स्ट ईयर दे विल बी सेकेंड ईयर है दे विल ऑल्सो बी रीडिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट हॉस्टल्स सो मतलब ऐसा नहीं होगा कि फर्स्ट ईयर और थर्ड ईयर होगा कुछ हॉस्टल्स में सीधा देर विल बी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर. But that also breaks the connections that the first yearites have made with the second yearites right now. So, No, would they be happy if you yeah, yeah, redistribute them? yeah. Like, We how have do you know? conducted a survey
Means on ground level we have talked with the freshers and all in the Gorang hostel and Barak Umium, so there will be no problem. Why should HAB inspect the hostel sports room, gym, and music rooms? How can HAB inspect when HMC exists? सी इंस्पेक्शन का मतलब ऐसा है कि सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, एक जिम का एग्जांपल अगर हम देखते हैं, जिम में कुछ अगर इक्विपमेंट का मतलब मुझे इक्विपमेंट चाहिए, तो अब वो कंसर्न अथॉरिटी जो रहेगी मेंटेनेंस या स्पोर्ट्स, उसके थ्रू वो हैब के पास आएगा कि मुझे मतलब ये चाहिए। अब उसकी एक रिवर्स फॉलो भी होना चाहिए कि जैसे हैब ने उसको फंड दिया, तो वो इंस्पेक्ट भी होना चाहिए कि हाँ ठीक है, इतना फंड गया तो इतने फंड की वहाँ पे चीज़ लगी, ये चीज़ इंश्योर करने के लिए है। So, like, on what intervals do you expect the inspection to be done? Once we get the information that the thing is installed, we can check. Let's move to the second segment. Okay. List all hostels of IIT Guwahati. The number? No, all the names. You can also mention the number 16, including MSH and Dikhao. and the names. All hostels. Yeah. Lohit, Brahma, Disang, boys and girls included. Next will be Umiam, Barak, Kameng, Gorang. Then Lohit, Brahma, Disang is over. That Kapili, Dihing, Manas, Siam. How many hostel general body meetings should happen in a calendar year? How many? How many hostel general body meeting should happen in a calendar year? Twice. According to the hostel constitution, what is the minimum quorum required for an HAB meeting to proceed, and which individuals from each hostel can serve as its representatives? Can you repeat? According to the hostel constitution, what is the minimum quorum required for an HAB meeting to proceed, and which individuals from each hostel can serve as its representatives? Quorum is 4 days, and general secretaries can represent. Who are the runner-ups of GC in last 3 years? Lohit. Last 3 years. Last 2 years. What is HAB PR? Give full form and explain about in one line. What? What is HAB PR? Give full form and explain about in one line. HAB procedures and regulation. It is the full form. It is the rules and regulation that has to be followed by the HAB. Okay, thank you. Let's end the interview.